कोण म्हणटा मरे ते मांडवीचे न्हंयेन एक भांगराचें नुस्तें आहा आनी तें तर मेवलें न्हू तूं गिरेस्त जाताय. खूब ते बादी मरे ते धेप्याचो पळय शापो आहा तेका एक मेवल्लें. हय खरें न्ही. म्हाका जाल्यार आजून एकूय नुस्तें गावूंक ना मरे. हांगा सगलें आहा तें काळेंच उदक. क्या गोवा में बीचेस है, चिल लाइफ है। और यहाँ पे ना 500 साल तक पुर्तगीज रूल था, तो काफ़ी पुर्तगीज टाइम की बिल्डिंग्स भी हैं। तो ये सब आपको ना इंडिया में बाकी जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी अलग है, इसलिए यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट। Yes, casinos are there. They are fine, meaning people have learned to live with it now. सो लोआ प्रमाणे तांणी ऑफशो आसपाचें. ऑफशो म्हणल्यार सर्टन नॉटिकल मायल्स अवे फ्रॉम द कोस्ट. दॅट इज लायक आउट इन द अरेबियन सी. पूण ताका पळयलें आतां दे आर लायक ऑलमोस्ट 100 or 200 meters away from the banks of the river. Hi, Namaste. I'm Nisha. I'm from Sikkim. I'm working with Agent for the past 4 years. At first, my parents were worried that I'm moving to Goa, but now there is no problem. They are very happy. ते तुमची शिफ्टी असता 8 वरांची शिफ्टी असता. सकाळी 7 ते चालू होता शिफ्ट त्यांची. लास्ट शिफ्ट रातची 3 असता. जनरली सांगा की चडशे मॅनेजर बी आहा पळय ते भायले थोडेशे आहा. They don't want to take Goan people, but most of the girls are not interested in gaming. Wherever people saw me, I feel like they treat me like foreigner, Japanese, Korean, something like that. मेरा होम टाउन का नाम है अनिनी. वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे लास्ट पार्ट है. कॉलेज नहीं गई, मौका नहीं मिला मुझे कॉलेज जाने की. ओनली क्लास 12 उसके बाद बाहर आए. अभी लाइक बाहर के लोग भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानने लगे हैं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, अरुणाचल कहाँ है. एंड हम लोग के लिए बहुत टफ है सिटी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट प्लेस है. और हम लोग जितना डिफरेंट प्लेस पे घूमते हैं उतने डिफरेंट कल्चर्स एंड रहन सहन, तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से. इमोटेटे किपो कुमकता गुवा का सुट्लाप तेखान mak nei lawa asyong ka ti ema mase tu na chuan nuam ta tin ko om to a kan korin chuan promotion nei na chance sha ania gowa chu a e lunga leng don mizo cha ya kha don si a tiangin ti su lungai du su. लोग फ्लाइट से आते हैं सीधा एयरपोर्ट से कैसीनो, दिन भर रात भर खेल के ना नेक्स्ट फ्लाइट से वापस दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलोर. एक शिप पे है ना, मतलब एक शिप 800 करोड़ का होता है और रोज ना 10 लाख रुपए टैक्स देता है. So right now these guys are the kings of the kings, you can say. And also you can say king makers with regard to having so much power and money to be able to influence policies and the government formation in Goa. The thing is, we don't speak so much good in Hindi. People are abused so much, right? When they play, sometimes they talk nonsense. It's not allowed to abuse, but when people lost like 50 lakh in 5 minutes, we can't help it, right? When it comes Diwali, Ganpati, this, everyone want to take holiday. We don't need it, we don't ask for it. Christmas, they don't give, we're still happy. We are not with family, there is no point of celebrating now.
वी फील एज लोकल्स की यू नो हाचें ब्रँडींग वयता थंय आसता. आमकां नाका की आमी एक गॅमलिंग डेस्टिनेशन जावपाचें गोंयांत. खूब वायट दिसता आमकां. O que eu sinto hoje em dia é que os casinos lá estão, mas os goeses não fazem parte dessa realidade. Às vezes penso, quem vai aos casinos? Há goeses que vão aos casinos? Ou isto é apenas para os turistas? त्या कॅसिनोच्या गुरक्यान आजूय आमकां धांवडले. म्हणटा कॅसिनोच्या वाठाराचेर रापणी करप ना. तर खी गेले ते भांगराचे नुस्तें आतां? कोण म्हणटा की ते मरे ते कसिनो आहा पळय तेच्या पोंदाक रावता आनी कोणूय तर त्या बोटी वयल्यान पडलो न्हू तेका गिवता ते. सोड रे ते आदल्यांचे गजाली. ना 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 राव, आनी एक गजाल आहा. ते म्हणटात की ते धेंप्याच्या पळय शापायचे भांगराचें नुस्तें आहलें पळय तें खूब व्हडलें जालें आनी एक दीस आख्खो गांवूच गिवलो आनी नाच जालें.